Assalamu alaikum. मेरा नाम अंबर शमसी है. I'm director at the Center for Excellence in Journalism, and welcome to Nazuk More, my podcast with co-host Uzair Yunus. और आप खुद ही अपना तारुफ करा लें उज़ैर. मेरा नाम उज़ैर यूनुस है, डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इनिशिएटिव एट द अटलांटिक काउंसिल, कमिंग इन फ्रॉम डीसी. और आज के शो में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे बात होगी. शुरू हम करेंगे डोमेस्टिक एजेंडा से. पाकिस्तान में खान साहब ने अपना मार्च रिज्यूम कर दिया है. अरशद शरीफ के जो मर्डर है उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आई इस हफ्ते. सम करेक्ट, सम नॉट सो करेक्ट, सम डिस्प्यूटेबल. उस पर बात करेंगे. बाजवा साहब रिटायर होने वाले हैं, वो कॉन्फर्मेशन आ चुकी है. और फिर हम देखेंगे वाशिंगटन डीसी में जहां मिड टर्म्स हुए. जो बाइडेन की पार्टी परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेड, सो विल टॉक अबाउट दैट एंड हैव एन एक्सपर्ट इंटरव्यू लाइंड अप फॉर इट एज वेल. और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, विनर्स एंड लूजर्स से पहले क्रिकेट की बात होगी जहां टीम पाकिस्तान द बॉयज इन ग्रीन are in the final, and the boys in blue got destroyed out of the final. तो मेलबर्न में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो नहीं होगा, बट स्टिल वेरी एक्साइटिंग फॉर पाकिस्तान. सो अंबर, शुरू करते हैं अरशद शरीफ के मर्डर से. ब्रेकिंग न्यूज़ आई पाकिस्तान से. टीवी एंकर कामरान साहब ने जो है तस्वीरें चला दी कि जी टॉर्चर हुआ है अरशद शरीफ के ऊपर. आज सुबह रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आपसे एक ट्विटर थ्रेड भी शेयर किया कमिंग आउट ऑफ केनिया व्हिच इज डिनाइंग दिस. और उन्होंने केनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी तस्वीरें भी लगाई हैं उस पर कि दिस इज नॉट व्हाट कामरान साहब इज क्लेमिंग. टेल अस व्हाट हैज हैपेंड विद दिस मर्डर इन्वेस्टिगेशन, वेयर डू थिंग्स स्टैंड टुडे? जी, उज़ैर देखें, ये बात तय है कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से क्योंकि एक मुतालबा ये भी सामने आ रहा था कि इसको एक इंटरनेशनली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ रूल्स एंड प्रोसेसेस होती हैं वो फिलहाल तो नहीं नजर आ रही. लेकिन मेरी जितनी मीडिया इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो ये मामला देखती हैं, खास तौर पे राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट एंड अटैक्स अगेंस्ट फ्री प्रेस, उनका तो यही कहना है कि एक बेहतरीन तरीका ये होता है इन द इंटरमीडिएट व्हिच इज इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग बाय वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस. तो हमने देखा कि जिस तरीके से केन्या के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी एक ARY के ही इकरारुल हसन है, वो भी केन्या पहुंच गए हैं. मुर्तजा अली शाह जो जियो के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की. वॉइस ऑफ अमेरिका की रम अब्बासी साहिबा, she also reached Kenya. So it's really important in order to assert facts कि ये multiple independent investigations चलती रही. इसके बावजूद के कमीशन का मुतालबा जो है वो अभी तक जो जज थे उन्होंने अपने आप को रिफ्यूज भी कर लिया, I believe. That hasn't really moved forward. But anyway, what we know right now is कामरान शाहिद ने बहुत तहलका खेज एक सनसनी उन्होंने फैला दी कि अरशद शरीफ को टॉर्चर किया था. और उनका दावा था कि फिंगर नेल्स रिमूव किए गए थे, मल्टीपल टॉर्चर मार्क्स थे और शायद 3 घंटे उनको टॉर्चर किया गया. लेकिन अगर आप जो पिम्स की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें भी उसके निशानात का जाहिर नहीं किया जाता. और दूसरी तरफ जो जाहिर अगर आपको एतबार ना हो पिम्स का तो केनियन पुलिस का भी शायद एतबार ना हो. लेकिन जो आपने भी मुझे ट्विटर थ्रेड भेजा था, नेशन अफ्रीका एक इदारा है, उन्होंने इसकी कवरेज भी की और इसको तस्दीक भी की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कितनी ज्यादा मुमासरत, यानी कि व्हाट सिमिलैरिटीज आर देयर व्हिच टेल यू कि दीज वर फेयर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स. और फिर उनसे क्या कंक्लूजन्स अखज किए गए थे जो एग्जामिनेशन हुई थी. तो डॉक्टर अहमद कलेबी हैं, बता दूं वो कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं. उनसे बातचीत की थी नेशन अफ्रीका की. और उनका जो ट्विटर थ्रेड, आई वुड रेकमेंड एनीबडी टू रीड इट. इट लेज आउट अ वेरी लॉजिकल केस कि जो मल्टीपल गन शॉट्स के हवाले से जो बात की गई है दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में, वो भी एक जैसी है. यानी कि मुमासलत की मैं जो बात कर रही थी उससे आपको नजर आता है कि दीज वर फेयर एग्जामिनेशंस, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था. उसमें इंटरमीडिएट रेंज की बात की गई है, खासतौर पे जो केनियन पुलिस या केनियन पोस्टमार्टम इसमें कहा गया कि इंटरमीडिएट रेंज पे फायर किया गया था, 2 थे शॉट्स. which is also important because there was some speculation कि close range पे firing की गई थी या नहीं की गई थी, which tells you कि proximity, it sort of would point a finger at who did it, right? कि अगर ड्राइवर थे या he was
whoever shot, Kenyan police was allowed to enter the vehicle and shoot Arshad Sharif, or he was taken out of the vehicle and shot at close range. So ये और अगर intermediate range की बात की इसके गई है. अंदर एक बात जो ऑडियंस के जो लोग हैं जो क्राइम ड्रामाज या शोज देखते हैं या सोप्रानोस जिन्होंने देखा हुआ है उनको भी शायद याद हो, या वीडियो गेम्स वायलेंट खेलते हैं उनको मालूम हो कि द इम्पैक्ट ऑफ अ बुलेट ऑन समबडी व्हेन इट्स क्लोज रेंज वर्सेस अ मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज या फार रेंज, उसका बॉडी पे इम्पैक्ट डिफरेंट होता है. तो ये बात उस पोस्टमार्टम में है. और इस थ्रेड का जो आप जिक्र कर रही हैं अंबर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू गो चेक इट आउट एज वेल, बट प्लीज कंटिन्यू. यस, सो और ये भी बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है, क्या वजह थी, वो तो वाज़ेह तौर पर दोनों पोस्टमार्टम्स में नहीं लिखी गई, लेकिन ये लिखा गया है कि जो उनका इंतकाल हुआ था वो आफ्टर बीइंग शॉट 10 से 30 मिनट के बाद हुआ. And these are obviously pieces of a puzzle eventually जो आप केस भी बनाते हैं या try to figure out what happened. ये बहुत अहम points होते हैं to understand, because we also have to remember, according to one report to Mursid Ali Shah, I will obviously quote anybody just the investigation, क्योंकि I have not been to Kenya, so it's not my investigation, but ये बताया जाता है कि इसके बजाय कि अरशद शरीफ को बराह रास्त अस्पताल या डिस्पेंसरी लेकर जाया जाए, क्योंकि रास्ते में है उस इलाके में जहां उनको कत्ल किया गया था, लेकिन उनको एक और फार्म हाउस की तरफ लेकर गए थे खुरम जो ड्राइवर ने. So, these are all things that come out of independent investigations, which is, as I said, is really important to get to the truth, the heart of the matter. So, ये भी बताया गया था, according to both postmortems, मुमासिल आपको मिलती है कि हाई वेलोसिटी थी, and that's also that could be an important point. But torture के बारे में बताया जा रहा है कि अगर fingernails remove हुई थी, which was one sign of torture जो एक बताया जाता कामरान शाहिद की तरफ से, तो वो DNA टेस्टिंग के लिए भी रिमूव की जाती है during postmortem. So, torture के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि कामरान शाहिद साहब ने जो एक सनसनी फैला दी, जो उसके बाद उन्होंने माजरत भी की अपने ट्विटर हैंडल पे. ये जो खानदान है, जो फैमिलीज बच जाती हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है, री-ट्रॉमेटाइजेशन होती है जब आप इस किस्म की तस्वीरें, इस किस्म के असर्शंस आप देखते हैं ऑन टेलीविजन. कामरान शाहिद ने भी क्या इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिस्ट से बात की थी in order to back up his claims? So I don't think so. There's also a question of जो अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया, उनका भी सवाल ये था कि किसने ये जो तस्वीरें हैं ये लीक भी की, क्योंकि घर वाले काफी दिनों से पिटिशन लेके कोशिश कर रहे थे कि उन्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट दी जाए. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव रेड एंड हर्ड. यू कैन कंफर्म दैट इफ दैट इज ट्रू इंडीड. और उनको नहीं दी जा रही थी, और ये पिम्स जो है वो उनको खानदान वालों को नहीं दे रहा था और लीक हो गई. और अंबर ये एक पैटर्न है, राइट? आई मीन you're a journalist and you've seen and gotten training on this as well. मेरे दो ब्रॉड सवाल हैं as an outsider on this. एक तो ये कि एथिकल ट्रेनिंग क्या दी जाती है पाकिस्तान के बड़े मीडिया इदारों में? क्योंकि इट इज़ हेनस, राइट, कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप प्राइम टाइम पे जा रहे हैं और आपने ये तस्वीरें चला दी, विच इन एनी केस, इवन इन द वर्स्ट केस, अगर ये होता कि उसके कोई खानदान वाले भी नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं, इवन देन टू मी स्ट्राइक्स एज एथिकल वायलेशन कि आप टीवी पे ये चीज़ चला रहे हैं, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. और ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे आपने कहा, उनकी अहलिया है, उनके खानदान वाले कोशिश कर रहे थे, उनको रिपोर्ट नहीं दी जा रही. लेकिन उससे पहले भी अमर, मुझे याद है, मैंने खुद नहीं देखी, अल्लाह का शुक्र है व्हाट्सएप पर नहीं आई, बट आई नो कि उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें चल रही थी इन टर्म्स ऑफ द बुलेट वुंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो वो भी सर्कुलेट हो रहा था. And is that training, is that not provided in sufficient amount to these people to understand कि Kamran साहब, you cannot just go on TV and release these things? नहीं, मतलब उज़ैर, आप समझते हैं कि कामरान शाहिद अपने आप को बालातर नहीं समझेंगे एथिकल जर्नलिज्म से, बिकॉज ही इज अ ब्रांड नेम एंकर. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. दूसरा ये भी है कि जो मीडिया इदारे हैं वो भी बहुत बहुत ज्यादा, जितनी मेरी इंटरेक्शंस होती हैं विद जर्नलिस्ट, जहाँ हम, क्योंकि हम एथिकल रिपोर्टिंग पे बहुत ट्रेनिंग्स करवाते हैं एट आवर सेंटर एज वेल, एंड आई इंटरेक्ट विद जर्नलिस्ट, एंड उनका यही रोना होता है कि अच्छा, आप तो हमें बता रही है ना कि आपने जो विक्टिम है या विक्टिम फैमिलीज है, उनका खास तौर पे आपके एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है और उनका ख्याल रखना होता है, लेकिन हमारे जो बैठे होते हैं, डेस्क पे बैठे होते हैं, जो बॉसेस होते हैं, जो ब्यूरो चीफ्स होते हैं, वो तो हमें यही पुश करते हैं कि आप जाकर तस्वीरें लें, एक्सक्लूसिव लेके आए. So it's partly the race to for exclusivity. It's partly, I don't think it's just a matter of training.
and as far as कामरान शाहिद is concerned, मेरे ख्याल में कि वो ट्रेनिंग की वो तो ख्याल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें एथिकल केयर की बात जो होती है, सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुतासरा है वो ज़ाहिर अरशद शरीफ की फैमिली है, उनकी वालिदा है, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं। उन पर क्या गुजर रही है और क्या गुजरती है, सबसे पहले तो उनका ख्याल रखना है। अगर हम इंसाफ की भी बात करते हैं, जाहिर है ऐसा कत्ल एक सहाफी का, उसका सच तक पहुंचना भी अहम है, for various reasons, because there's obviously political motivations involved in as well in agendas, but it also has a chilling effect on other journalists who may want to take a dissenting route, or who may जो नाक़िद होंगे मौजूदा हुकूमत, military establishment। And then the most important is कि उनको कुछ इंसाफ मिले, जो मुतासरा खानदान है। और अगर आप उनसे पूछे बगैर, उनकी इजाजत लिए बगैर, उनको इन्फॉर्म किए बगैर, क्योंकि आप कोई भी ऐसा हादसा होता है, ऐसा कत्ल होता है, सबसे आपने अहम जो चीज जहन में रखनी होती है कि इस पे, आई मीन इट्स बेसिक ह्यूमैनिटी एज वेल, इंसानियत है कि आप उनसे पहले सोचें कि उन पर क्या गुजरेगी। अगर आप उनको दिखाए बगैर, पूछे बगैर ये जो खबर है इसको आम कर देंगे। ये खबर आम होने से पहले अरशद शरीफ साहब जो कत्ल जब उनका हुआ था, खबर आई थी, उनके खानदान को पहले बताया गया था। इससे पहले के मीडिया पे ये बात रिपोर्ट मंजर आम पर सामने आई, एंड इट्स द सेम प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन हियर एज वेल। और इसके अंदर फिर दूसरा सवाल अगेन वो ये आता है कि कामरान शाहिद साहब टेलीविज़न पे बैठते हैं, उनके पास ये रिपोर्ट है, वो तस्वीरें चला रहे हैं। जैसे हमने बात की कि केनिया से कुछ और रिपोर्ट आ रही है, यू एन आई आर कोटिंग अ डॉक्टर हुज पुट आउट अ ट्विटर थ्रेड हु स्पोकन टू एन इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने जो है देयर एक्सपर्ट्स इन दिस, राइट, ये बैलिस्टिक एनालिसिस हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एसेट्रा, यू एन आई कांट डू इट, कामरान शाहिद कांट डू इट। तो कामरान साहब अगेन ऑन द मीडिया साइड हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस, कि वो एक एंकर हैं, वो टीवी पे बैठे हैं, but what about the editorial standard that says कि you are not the expert, you actually have to bring on a doctor or somebody who's an expert in forensic analysis or ballistics or whatever the field might be, and they should look at that report and give a full picture, right? Because I remember kal, for example, Dawn पे ही, I think it was Zarar Khodo who was talking and I was listening to him, he said कि जैसे आपने कहा कि डीएनए के लिए नाखून निकाले जा सकते हैं, उन्होंने एक और बात की कि जो ब्रूजिंग होती है वो पोस्ट डेथ भी होती है, इट्स अ मेडिकल फिनोमेनन, आई एम ब्लैंकिंग ऑन द नेम, बट ही वाज एक्सप्लेनिंग इट, सो इट कुड बी दैट, अगेन वी डोंट नो, right? Because you and I and Zarar are not doctors and Kamran is not a doctor who specializes in this field. So again, when you are in a big media organization going on primetime making a claim like that, what about that editorial standard that says, you know what, you are not the expert here, let's bring on somebody who can look at that document and you can have a line of questioning, और फिर वो एक्सपर्ट जवाब दे। तो वो भी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपना एनालिसिस दे दिया कि जी टॉर्चर हुआ है, मैंने तस्वीरें देखी और ये आप भी देखें, which also again strikes as really ridiculous to me. I don't know what your perspective on this is. नहीं, उससे मुझे वो एक मीम याद आ गया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं माहिर हूँ, आई नो एवरीथिंग, and that's what a lot of anchors and journalists, especially if they're in the public eye, और आपको नजर आता है कि उनकी एक फॉलोइंग है, as I said, ये ब्रांड नेम होने का भी एक मेरे ख्याल में नुकसान है। It also shows a lack of humility कि आप अपने आप को माहिर के तौर पर पेश करते हैं। बहुत सारे ऐसी स्टोरीज होती है जहां आप कह सकते हैं जराए ने बताया, लेकिन यहाँ तो आप जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, whether they're economists, whether they're doctors, you can bring them on screen to explain it, and I think that lends more credibility to your claims as well, कि हम कि ये एक medical opinion सामने आ रहा है इसके, so I think it's really a lack of humility, और एक हमारे यहाँ तो यही वैसे एक रिवाज भी है कि आप हर चीज पे माहिर बन के अपने आप को पेश भी करते हो, और ये मीडिया चैनल्स इनकरेज करते हैं। आप प्रोग्राम में जाते हैं, आपसे मईशत के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, कानून के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। मैं तो हमेशा, आई मीन आई डोंट वांट टू टूट माय ओन हॉर्न, बट मे बी बिकॉज आई एम ओल्ड फैशन, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कुछ लोगों से या तो बात हुई है, या मैंने जो राय देखी है उसके मुताबिक, या मैं कहूंगी कि मैं इसके सियासी पहलू पर बात कर सकती हूँ, जहाँ I'm much more comfortable because I have some understanding of that. So I think it goes back to not just unethical journalism, but also goes back to the pressure of exclusives, the feeling कि आप बहुत माहिर हैं, आप brand name हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लोग आपकी following है, and just a lack of humility.
Yeah, and we'll keep covering this topic, of course. ज़रूरी है कि मालूमात आती जाएं, investigations, multiple investigations चलती रहें, और जैसे आपने शुरू में कहा, there are a lot of journalists covering this in Kenya, outside Kenya, Pakistani, not Pakistani. मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि डेक्लन वॉल्श कब अपना जो है करेंगे, क्योंकि he's Africa bureau chief for the Times, and I'm pretty sure he's snooping around the story as well. But we will keep covering it because I think it's an important story. Or the fallout, at least from my perspective, I don't know, this is my last point on this before we move on, is के हमरान शाहिद की जो स्टोरी थी उससे majority of my friends जिनसे मैं बात करता हूँ, जो इस टॉपिक को फॉलो कर रहे थे, who maybe are not in the weeds like you and I or others might be, but they follow this story, वो बिलीव कर रहे हैं आपके टॉर्चर हुआ है. अब उनको आप कुछ भी भेज दें, वो कहेंगे कि नहीं अब ये कवर अप है. एंड यस, देयर आर मोस्ट ऑफ देम आर इंसाफियंस, बट दैट डजंट मैटर. इवन नॉन इंसाफियंस आर बिलीविंग दिस एट दिस पॉइंट. एंड मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि सच क्या है झूठ क्या है इस स्टोरी के अंदर, राइट? And we have to keep at it and again pursue multiple lines, because that's how you can triangulate this stuff. But the other damage that his coverage did is it's muddied the waters a lot, because अब लोग कह रहे हैं कि टॉर्चर हुआ है. कुछ लोग अगर कह भी दें कि नहीं मेडिकली ये रिपोर्ट है, ये लिखा हुआ है, नहीं हुआ, या इस पे और मालूमात की जरूरत है, उन्होंने तो नहीं माननी अब ये बात. No, I'm going to end it there, let you end it there. And I do agree with you कि फिर आप एक तो यकीन उठ जाता है, और अब मेरे ख्याल में it goes back to that कि when you successfully muddy the waters, and a lot of people are asking this question, जो एक जायज सवाल है कि क्या जानबूझकर किया गया. कामरान शाहिद अपने आप को जो भी मर्जी कहे पेश करें as a vigilante for justice or whatever, but ultimately then it goes back to whether was there an agenda on doing this and all of that. So it's unfortunate. This storm hopefully will blow over a little bit, and there's these multiple streams investigations will continue जिसके जरिए आपको फिर trickle by trickle, drop by drop आपको हक़ाइक़ का सामना पता चलता है. And then you as any good journalist or anybody who thinks critically, analysis करता है, वो आप triangulate ही करते हैं. अगली स्टोरी पे चलते हैं अंबर. द अदर बिग वन, खान साहब इज बैक ऑन द मार्च. बाजवा साहब की सक्सेशन ऑब्वियसली नाउ इज इन फुल गो. ISPR ने कंफर्म कर दिया, अलविदाई दौरे स्टार्ट हो चुके हैं. खान साहब इज आल्सो नॉट बैकिंग डाउन. वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी गए जहां एक्सपेक्टेड आउटकम से सब ऑप्टिमल आउटकम ही आया है, बिकॉज ही वाज अ टफर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग. कामरान खान टाइप जो हैं एंकर्स नहीं थे जो उनकी तारीफें कर रहे थे. तो वो एक उस पर भी हम बात करेंगे. बट इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही है वो ये कि तहरीक इंसाफ के मियांवाली के एक लीडर कह लें, वो कहते हैं हमें नहीं पता ये कौन है, नोबडी हैं, आ गए कहीं से. फिर वो अपनी तस्वीरें भी दिखाते हैं. मेजर साहब हैं रिटायर्ड. उन्होंने कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे उन्हीं लोगों से जिनका नाम खान साहब ले रहे हैं, और सलमान अहमद भी इसमें इन्वॉल्व थे. तो वो भी उन्होंने भी आई थिंक शुरुआत उन्होंने की थी वीडियो ला के. So what's going on with Imran Khan, the march, the conspiracy to assassinate him? क्योंकि सलमान साहब तो कह रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर डाउन हुआ था उसके जो इंजन फेल्स हुए थे उसकी वीडियो भी उन्होंने निकाली थी कि खान साहब बड़े कामली बैठे हुए और पायलट जो है वो हेलीकॉप्टर को नीचे क्रिकेट फील्ड पे लेके आया वगैरह वगैरह. कि सलमान साहब कह रहे हैं कि अपने इन्वेस्टिगेशन कराई, उसमें सेडिमेंट डाला था फ्यूल में किसी ने. तो वो तो सजेस्ट कर रहे हैं कि पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट ये थी, हेलीकॉप्टर डाउन करने की कोशिश. तो what are you hearing and what's your take on all of this saga playing out in Pakistan with Khan and his march? देखिए इस वक्त हकीकी आजादी का जो मार्च है उससे उससे ज्यादा जो बड़ी स्टोरी इस वक्त हावी है वो आर्मी चीफ, अगला कौन आर्मी चीफ बनेगा, यही है स्टोरी है. और इसकी वजूहात भी बहुत वाज़ेह तौर पर हैं कि इमरान खान साहब जब पिंडी पहुंचने की बात हो रही है, which is about maybe 10 days from now, will be around the time जहां एक समरी जो जारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसपे ये बताया जा रहा है कि 3 नाम भी हो सकते हैं, 5 नाम भी हो सकते हैं, और कुछ तारीख के हवाले से भी बताया जा रहा है कि 17-18 को ये समरी जारी होगी जिसपे वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तेकाल होगा, वो किसका इंतखाब करेगा. वजीर आजम साहब आ गए वापसी, वैसे लंदन से आ गए हैं कि नहीं, ये वो 2 दिन की वेकेशन पे बिल्कुल चले गए? उनकी भी अलविदाई तस्वीरें अपने भाई नवाज भाई शरीफ के साहब साथ के वो साथ तस्वीरें चल आ गई हैं चुकी लेकिन है. आए नहीं है वो वापसी अभी तक. वो कहीं रास्ते में रुक गए मेरे ख्याल में. ये मतलब ऐसे अहम फैसले करने पड़ते हैं. आपको लगता है कि वो इतनी आराम से वो करेंगे और बगैर
नवाज शरीफ के मुशावरत के करेंगे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो इमरान खान साहब का कहना है कि चोर जो है यानी कि नवाज शरीफ, अब्सकॉन्डर कुछ लोग कहते हैं नवाज शरीफ, ये इनका इनका हक क्यों है, इनसे मुशावरत क्यों की जा रही है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले और से। मियाँ साहब जो है इस्तिखारा कर रहे हैं रात को बिठा के अपने भाई को राइट। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जो जो मुलाकात हुई थी, शरीफ खानदान तो जाहिर थे, लेकिन इसमें ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। So, you know, as usual, it wasn't just a Sharif huddle. There was also one minister who's obviously the bridge between the face, you know, the civilian face, and the bridge between the army and the civilian government. वो भी मौजूद थे। और इतना मसला क्यों हुआ है? इमरान खान साहब को मसला हुआ है, इस वक्त मीडिया में यही बातें चल रही हैं। और तीसरी तरफ आपको जो मौजूदा सिविलियन हुकूमत है उसका भी मसला चल रहा है। इसका मसला क्या है कि एक दो जो नॉमिनीज, पोटेंशियल नॉमिनीज हैं, फैज हमीद साहब और आसिम मुनीर साहब, ये दोनों मुतनाज़ा हैं। और ये मुतनाज़ा किस तरह से है? दोनों DGISI रह चुके हैं। फैज हमीद का नाम लिया हुआ है नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज साहिबा ने भी। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब had one of the shortest stints. He was the DGISI during Imran Khan's tenure and was replaced by Faiz Hamid, who is considered a favorite of Imran Khan. And Imran Khan के भी sorry to interrupt, मुनीर साहब, एक और फन फैक्ट एटलीस्ट फॉर मी है कि उनकी रिटायरमेंट खुद ही एंड नवंबर में है, तो अगर वो बन भी जाते हैं तो उन्हें एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी फौरन। Yes, it always boils down to an extension. So, ये जो अलविदाई दौरे थे, इससे तो जो कयास आराइयां चल रही थी कि बाजवा साहब एक्सटेंशन चाह रहे हैं या एक्सटेंशन मिल सकती है, जो एक पेशकश इमरान खान साहब की तरफ से भी की गई थी, और कुछ नून लीग के हलकों में भी बात हो रही थी कि दे दे, चले दे दे, लेकिन वो तो कयास आराइयां खत्म। और अंसार अब्बासी साहब जो पिछले कई दिनों से एस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेस रिलीज है वो खुद अपनी बायलाइन लगा के इशू करते हैं, उन्होंने भी इस हफ्ते आर्टिकल चलाया था कि एक्सटेंशन की कन्विक्शन की बात चल रही है और लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दे दें और आप ले लें वगैरह वगैरह। आप दे दें, तो आप ले लें, जाने की बातें जाने दें, जी जो जी शरीफ के दौर में हुआ एग्जैक्टली, तो इशारतन जो है वो कुछ एक सेगमेंट एस्टेब्लिशमेंट का भी जो है वो ट्रायल बलून्स तो शो कर रहा है इस हफ्ते तक, एज अर्ली एज दिस लास्ट वीक, के जरा सोच लें एक्सटेंशन हो सकती है तो जरा ख्याल करें। तो ये सिर्फ मियाँ साहब और खान साहब की ख्वाहिशात नहीं है, ये यहाँ एस्टेब्लिशमेंट में भी जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए। वेल, आई मीन देखिए, इसमें एक बहुत अहम जो मुलाकात हुई थी, जिसको कुछ लोग कोर कमांडर्स मीटिंग भी कह रहे हैं, कुछ इजलास कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सीनियर क़यादत के इजलास था, जो बहुत काफी घंटे चली। That's also something that happened during this week. Around the time जब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन वाया लंदन पाकिस्तान वो आए, और उसमें कुछ अकॉर्डिंग टू सर्टन जर्नलिस्ट एंड एंकर्स, इसमें मार्शल लॉ, लॉन्ग मार्च, ये भी बताया गया कि क्योंकि ये शायद कोर कमांडर्स का इजलास नहीं था, यूजुअली एक प्रेस रिलीज भी जारी होती है, इसमें जो अक्सर एक आपको एक टिपिकल क्लीशे में एक प्रेस रिलीज मिलती है जिसमें कहा था कि अमेरिकी सालमियत और एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के हवाले से बातचीत हुई, वो भी नहीं आई। सो अगेन आई वांट टू पॉइंट आउट कि इस वक्त जो महवर है, ये नहीं है कि हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुंचा, जो कातिलाना हमला हुआ था इमरान खान साहब का पर, उस पर तहकीकात कहाँ तक पहुंची, और ये भी नहीं बात आई कि उन्होंने अब शायद इतना ज्यादा डिस्कशन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक और साबिक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर का नाम भी लिया कि वो फैसल नसीर साहब के साथ मौजूद थे कंट्रोल रूम में। यू नो so none of these things are under discussion. What's being discussed is कि seniority list में जो नाम होगा वो लिया जाएगा या नहीं, या जैसे पहले एक नवाज शरीफ साहब या दीगर जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनका हमेशा तरीकाकार ये रहता है कि सीनियरिटी लिस्ट में सबसे जो नीचे नाम होता है या जो नीचे होता है उसको उसका इंतखाब करेंगे, कौन होगा, कौन रिटायर होगा, and who will be in the top 3 or the top 5, and how does that affect potentially elections going in the short term, and then obviously how he will deal with the current political situation, which is obviously Imran Khan on one side and then PDM on the other side. So लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें ये अपेरेंटली तय हुआ है कि अगर ये बात हो रही है, अगर ये वादा या इमरान खान साहब को कमिटमेंट की जा रही है कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो जाएगा
तो फिर हमने डट के खड़े होना है कि इंतखाबात अभी नहीं हो सकते, और हमारा हक है, हमारा इस्तेहकाक है कि इलेक्शंस की डेट हम कब अनाउंस करें। फिर इसके अलावा जो एक मसला ये भी चल रहा है कि कौन कंट्रोवर्शियल होगा, कौन नहीं होगा। इमरान खान, मेरी नजर में तो इमरान खान साहब एक नाम के अलावा जो पीटीआई के हल्कों में बात हो रही है, बाकी सब पे कोई उनका मसला नहीं है। बट द थिंग इज, इट इज ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर कि ये हुकूमत जिसका भी इंतखाब करेगी वो मुतनाज़ा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो इसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्वर करते हैं और पेश करते हैं, और वो इसको समझते हैं कि दे डोंट हैव द राइट to appoint the army chief. So I mean that's where things stand. I mean, I don't want to go into further speculation. That's kind of sort of what's been happening in the last week or so, and I think it's unfortunate कि it हावी हो जाती हैं बातें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा ऐसे ममालिक में, जहाँ ऐसे मुल्क में, ऐसे ममालिक में जहाँ जमहूरियत होती है, ये रूटीन अपॉइंटमेंट्स होती हैं। आई वांट टू रीइटरेट दैट दीज आर रूटीन अपॉइंटमेंट्स। लेकिन पाकिस्तान में ये सियासत में सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मौजूद बहस भी बन जाता है। और उस पे जो है काफ़ी सारी सिफारिशें चलने लग जाती हैं, कैंपेन्स चलने लग जाती हैं। एलिजिडली कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी तैयार हैं टू रन सर्टन कैंपेन्स टू प्रेशर डिपेंडिंग ऑन हु गेट्स नेम्ड, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और अगेन अगर फौज जितना भी इवन ऑन पेपर अगर हम उनकी बात मान लें, जो कि नहीं माननी चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ शुड बी अ लॉट ऑफ सिनिसिज्म इन देयर दिस, शुड बी, एंड आई कि शुड जब से वो दैट अंटिल दे प्रूव कि वाकई मदाखलत नहीं कर रहे या ये पॉलिटिकल है, कहना काफी नहीं है। ये तारीख है और मौजूदा तारीख भी है। ऐसा नहीं है कि हम अयूब के दौर में ही चले जाए, आजकल के दौर में की बात कर रहे जी। हैं। और इसके अंदर अंबर एक इंटरेस्टिंग बात, आई मीन मैंने एक किताब पढ़ी थी कुछ सालों पहले, आई थिंक इट कॉल्ड मैक्सिमलिज्म या मैक्सिमलिस्ट, आई मे बी गेटिंग द नेम रॉन्ग, बट इट वाज अबाउट यूएस फॉरेन पॉलिसी। और उसके अंदर वो ऑथर जो है वो एक इंटरेस्टिंग बात कहता है कि अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू से अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को देखें इन अ लॉन्ग आर्क ऑफ हिस्ट्री काइंड ऑफ वे, तो आपको नजर आएगा कि प्रेसिडेंट्स आते हैं, ओवर एक्सटेंड करते हैं। वियतनाम वॉर हो गई या कोरियन वॉर हो गई या आपकी जो है वॉर इन इराक एंड अफगानिस्तान हो गई, और उसके ब्लो बैक के बाद जो अगला प्रेसिडेंट आता है वो रिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जब रिट्रैक्ट करता है तो उस रिट्रैक्शन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है नियर टर्म में, वो और केओस क्रिएट करता है, क्योंकि वैक्यूम इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एंड हैज टू बी फिल्ड समहाउ। तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि उसके बाद जो है एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करने का प्रेशर जो है प्रेसिडेंट के ऊपर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो जिसने रिट्रैक्ट पहले किया था या उसका सक्सेसर आए, तो देर इज दिस टेंडेंसी टू गो बैक इन। हमने देखा ये अफगानिस्तान में विद द सर्ज, इराक में विद द सर्ज, वी सॉ दिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट इवन द ट्रम्प ईयर्स। तो वो बात मुझे रेजोनेट करती है फौज का रोल पाकिस्तान की सियासत में, कि एक चीफ जो है अगर कयानी जो है वो रिट्रैक्ट करता है तो उससे जो इंसुइंग केओस होता है उस पर फिर आपने वापस इंटरवीन करना पड़ जाता है। राइट नाउ इफ द डिसीजन इज, इवन इफ ऑन पेपर वी एग्री, एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, के अगर एक्चुअली ट्रूथ है इसमें कि हमने ए पॉलिटिकल होना है या न्यूट्रल कोट अनकोट होना है, तो आई डोंट थिंक दैट्स easy to accomplish, because the very act of the military now, after 4 years or 5 years, depending on how you count it, of being overtly involved in the political economy, कि जब आप विद्रॉ कर रहे हैं उससे, तो जो इंसुइंग केओस होगा, आपके अंदर टेंडेंसी होगी कि जी मईशत डूब रही है, सियासतदान कुछ कर नहीं सक रहे, देयर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, पैरालाइज हो गई है। there is a tendency then, and I understand that tendency, to re-intervene, and I think that's where the problem for the next chief will come, कि आपने पीछे रहना है और आपकी डिसीजन ये है, लेकिन आप जितना पीछे होंगे इमीडिएट टर्म में उतना ही ब्लो बैक होगा, उतना ही क्राइसिस मेटास्टेसाइज करेगा, और आपके अंदर प्रेशर आएगा इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी और बाहर से भी कि आप क्या कर रहे हैं, आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ये वाली लॉजिक आएगी। And I think that to me at least is the biggest risk over here in this situation. एब्सोल्युटली। ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, या आप विड्रॉल भी कह सकते हैं, अगला आर्मी चीफ कौन होगा और उनका क्या डॉक्ट्राइन होगा, दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट इम्पैक्ट obviously politics, which is unfortunate, but also कि फिर सियासी जमातें भी, हम उनको बुरा भला भी कहते हैं क्योंकि वो खुद भी बातचीत भी करते हैं, वो खुद भी निगोशिएट करते हैं, वो खुद भी उन्हीं के जरिए ताकत में, इक़्तिदार में आने की कोशिश भी करते हैं। बट
and the responsibility at this moment for this extraction is obviously on the army and how they play it moving forward. And there may even have been talk. I mean, I know that there was talk about martial law at some point. बातचीत चल रही थी. I won't say that this is something that's on the cards. It obviously seems unlikely now, but even so, that's on the cards. There's also been talk about how the next army chief will deal with Imran Khan, for instance. अगर हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह से निपटना है, क्योंकि इमरान खान साहब has been very, he's been going after them. He's been naming names. He's already made the chief, and I will maintain that position. It isn't about an individual. He's made whoever is the next army chief controversial. So these are not easy things to extract from it. It tells you that when you create a mess, cleaning up the mess sometimes makes more of a mess. And this may take a little longer than people would like to hope. I do want to sort of talk about ये जो इमरान खान साहब, क्योंकि उनका तरीका रहता है कि उनकी एक कैंपेन चलती है, मीडिया ब्लिट्जक्राइग भी चलता है, और उन्होंने इस वक्त इंटरनेशनल बैन अवी मीडिया के साथ कई इंटरव्यू सामने आए हैं, CNN के साथ, TRT वर्ल्ड के साथ, DW के साथ. Just want your take on it, because I know that there's been a lot of politicized commentary on these interviews. What do you think was the purpose, and do you think that purpose was achieved? I think purpose था कि assassination को internationalize किया जाए, उसको news में रखा जाए. It has been covered by the international media, but obviously there's a lot of other things going on in the world. North Korea missiles fire कर रहा है, Ukraine में खरसोन से retreat हो रही है, US में midterms हैं, gas crisis है यूरोप के अंदर. तो उसके अंदर obviously this is one story among many that is there, and it doesn't rank as high and in the issues that even I just described. तो वो आई थिंक गोल था कि मीडिया पे जाया जाए, कवरेज हो, CNN वगैरह बात करें, तो इट ऑब्वियसली गिव्स यू अ वीक लॉन्ग साइकिल. हम बात कर रहे हैं राइट, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर. आई थिंक ये पर्पस था. I don't think optimal outcome achieved हुआ because the line of questioning was tough as it should be and as usually is in international media. और उनके क्लेम्स को फैक्ट चेक करने की कोशिश की गई, उनसे पूछा गया कि आप अपना एविडेंस दें, क्या है एविडेंस. और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक दिस इज वेयर आई वुड कमेंड ऑल ऑफ द जर्नलिस्ट दैट डिड दैट इंटरव्यू विद हिम. तो उन्होंने पूछा कि आप अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं अभी, तो आपने अपने ज़माने में क्यों नहीं सफाई की, या आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं तो क्या आप सिविलियन रोल चाहते हैं. और वो उन्होंने डॉज करने की कोशिश की या न्यूट्रल अंपायर्स की बात कर दी कि मैं लाया था क्रिकेट. बहुत 200 साल पुरानी तारीख क्रिकेट की वो थी, उसकी मिसाल भी. बिल्कुल, वो आवाज भी थोड़ी सी कम आ रही थी. बिल्कुल, आवाज कम आ रही थी. तो आई थिंक इट वाज सब ऑप्टिमल, एंड आई थिंक दिस इज अ इशू. लाइक ये मुझे याद है, ये मैंने PTI के लोगों से खुद डायरेक्टली पूछा था जब खान साहब ने जॉनथन स्वान वाला इंटरव्यू किया था, एब्सोल्युटली नॉट वाला. तो मैंने लोगों से पूछा था कि यार अगर इफ ही सिटिंग विद जॉनथन स्वान, एंड आई नो दिस बिकॉज आई वर्क विद सम सीनियर पीपल इन द ऑन द USG साइड हु आर डिप्लोमैट्स एटसेट्रा, राइट. सो आई नो द प्रेप दैट गोज इनटू एन इंटरव्यू लाइक दैट. मतलब 6-7 तो सिर्फ एनालिस्ट के रिव्यू होते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स के, राइट. जब और आप लिखते हैं और फिर रिव्यू होते हैं, फिर लिखते हैं, फिर रिव्यू होते हैं. तो इट टेक्स, अगर 1 घंटे का इंटरव्यू है तो एटलीस्ट 8 घंटे की प्रेप टाइम गोज इनटू दैट इंटरव्यू. आई नो दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. तो मैंने पूछा कि खान साहब ने प्रेप कितनी की और कौन उनको प्रेप कर रहा था, राइट. बिकॉज जॉनथन स्वान हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग देन बेकी एंडरसन एंड अदर्स, यारा यारा, राइट. यू नीड टू प्रिपेयर. तो ऐसे लगे कि नहीं ऐसी प्रेपरेशन नहीं होती, वो प्रेपरेशन यही होती है कि आके बैठना है. तो मुझे लगता है ये वही हुआ था कि आके बैठेंगे और सवाल का जवाब देंगे. And when you don't prepare, Khan Saab is a cricketer, he should know this better than anybody else. If you don't do the warm-up before the big game, odds are that your muscle is going to get pulled or you're going to get hit with the bouncer, and then that's the end of your innings. Yeah. And I think that's essentially what happened with these interviews. बिल्कुल. आई थिंक इससे जो आप दो जो आई थिंक की टेकअवेज थे, पूरे इंटरव्यू आप सुने ना सुने, लेकिन ये याद रह जाता है कि खान साहब से पूछा गया था कि आपके पास इल्जामात जो आप कर रहे हैं मेजर जनरल फैसल नसीर पे और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर, तो फिर आपके पास क्या सबूत है. उन्होंने एक कहानी पेश की और उसको बताया कि इसकी वजह से आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए, जो ज़ाहिर है हमारी मीडिया पे तो चल जाता है, लेकिन
evidence-based allegations always have more impact on the international media. उसका जवाब उनके पास मेरे ख्याल में नहीं था. दूसरा मेरे ख्याल में दिलचस्प बात थी, और ये काफी कम पॉइंट उठाया गया था इंटरनेशनल मीडिया पे, कि जो DW की मिलिसा थी, उनका ये कहना था, उनका पूछना था कि आप बहुत सारे ऐसे लोग समझ रहे हैं कि जैसे बोल्सोनारो है, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, और ट्रम्प है, उनकी तरह आप एक जो ये मार्च है, या वो इक़्तिदार दोबारा से हासिल करने के लिए आप हकीकी आजादी मार्च उसको नहीं कहा. So I mean, I think that perception, he wasn't able to answer that question as well. You know, just saying कि मैं बहुत ज्यादा मकबूल हूँ और इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, या ये कहना कि जमहूरी हक है. मगर आप सवाल फिर यही पूछते हैं, अगर जमहूरी हक भी है, लेकिन फिर मौजूदा हुकूमत का भी तो जमहूरी हक है कि वो इंतखाबात अपनी मर्जी की तारीख के साथ करें, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी वजीर आजम का इस्तेखाब होता है. सो आई मीन, आई थिंक दैट्स माई की टेक अवे, दैट मे बी खान साहब की इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि ही इज समबडी हु द इंटरनेशनल मीडिया सीक्स and will do interviews with, as opposed to other political leaders. Bilawal Bhutto शायद एक exception है because of his mother and his background as well. लेकिन आप शरीफ खानदान का इतना ज्यादा नहीं देखते, मगर इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यूज होते हैं. So I think in that sense those are unfortunate key takeaways. I think it defeated the sort of narrative building जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल भी करना चाह रहे, कि अगर इतनी transparently इन इल्जामात का सबूत आप नहीं पेश कर पा रहे, या आपको एक पॉपुलिस्ट लीडर जो बुरा समझा जाता है मगरब में, उसकी तरह पेश कर रहे हैं. सो आई थिंक इट kind of defeats the sort of positive image in the West, or the victimhood image in the West that you want to create. Yeah, and I think on the big part to me on this also was Dawn का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया अंग्रेजी में जो छपा, उसके अंदर उनसे पूछा गया कि फौज के किरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने वहाँ भी बात जो है वो टाल दी और कहा कि बैलेंस होना चाहिए और साथ मिलके काम करें तो मुल्क के लिए बेहतर होगा वगैरह वगैरह, which is again you know a lot of Insafians, at least my Insafian friends maintain कि नहीं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, उन्होंने सीखा है पिछले 3.5 साल से, एंड आई ऑलवेज मेंटेन कि नहीं, उन्होंने अभी भी वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि co-opt with me, not with them. Not that civilians should have the right to rule this country as per the constitution. Those are very different things, and I think Insafians should understand the nuance in those 2 points, and Khan is making the former, co-opt with me, not the latter, which is your role constitutionally is not to intervene in politics. And I think so long as Khan maintains that. Yeah, no, I think has anybody heard Khan say that? कि कोई एक बयान जिसमें खान साहब ने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि फौज को अपने आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए. Correct me if I'm wrong. I would love to see a clip or a statement with those very clear words. वो हर बात घुमा देते हैं, और इन इंटरव्यूज में भी, डॉन के इंटरव्यू में भी उन्होंने वही घुमा दी कि न्यूट्रल अंपायर वगैरह वगैरह. सो विल सी, मे बी इफ ही गेट्स देयर. एंड अगेन दूसरे फ्लिप बैक ये है उसका पुश बैक के मरीम नवाज जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग ये बात क्लियरली कह चुके हैं, लेकिन कहना और करना जो है वो बड़ी डिफरेंट बात है. हम इस पे भी बात कर चुके हैं कि दिस गवर्नमेंट PDM is hybrid 2.0 or maybe hybrid 1, 2, 3, 4, 4.0 if you count from 2008 onwards, right? People's Party, PMLN, PTI, and now PDM. तो ये तो चलता रहता है, but again Khan Saab should at least be in his words clearer. I agree with you. Next up, बाहर चलते हैं पाकिस्तान से. अंबर, this was a big week here in Washington. Midterms हुए, very interesting outcomes. रेड वेव की बात हो रही थी, तो पहले तो जरा सुनाते हैं लोगों को कि क्या बात हुई US के अंदर इलेक्शंस के ऊपर, on either side, Republican as well as on the Democrat side. So just watch these clips and then we'll analyze the story. So did you hear the news? There was no red wave last night. While this is a pretty surprising development to most people, including us here at the desk, just imagine being a viewer of Fox News today after weeks of being promised one. Be an analyst for a second. Does it feel like a red wave? It feels like a red wave, Brian. You know, your predictions of a red wave are accurate. Somebody made a surfboard, said the red wave is coming. Red wave rising. That red wave that I'm convinced is coming. The reports I'm seeing show a big red wave coming. Sleepy Joe just guaranteed a red wave in Pennsylvania. There's a lot of energy on the ground. You probably hear the rally in the background right now. We think we're going to have a big red wave in Michigan. You've endorsed more than 330 candidates this election cycle. Tonight, win or lose,
the results for Republicans, how much of that will be because of Donald Trump? Well, I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all, okay? But it'll probably be just the opposite. When they win, I think they're going to do very well. I'll probably be given very little credit, even though in many cases I told people to run, and they ran, and they turned out to be very good candidates. You know, they've turned out to be very good candidates. But usually what would happen is when they do well, I won't be given any credit, and if they do badly, they will blame everything on me. So I'm prepared for anything, but we'll defend ourselves. And the experts said we couldn't beat the odds, but we did beat the odds. And we did it for one reason. This is not hyperbole, because of you and all of you up on the balcony. It's hard to see up on the balcony, but God love you. I really mean it. Because of you. You believed in the system. You believed in the institutions. You fought like hell for it. And that's the most important thing that happened, in my view, in this election. It was the first national election since January 6th, and there were a lot of concerns about whether democracy would meet the test. It did. It did. It did. क्लिप्स आपने देखी अंबर, तो क्या फ्रॉम अफार अगेन, मैं पाकिस्तान दूर से एनालाइज करता हूं, तो आप अब जरा दूर से अमेरिका एनालाइज करें. व्हाट डिड यू टेक आउट ऑफ द मिड टर्म प्रोसेस? देखिए, मिड टर्म प्रोसेस एक तो ये कि एक जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए एक, जैसे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान के साथ मवाजना करूंगी क्योंकि आई थिंक दैट्स व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग. जहां पाकिस्तान में जो दिलचस्पी होगी ट्रंप के हवाले से कि क्या इसका मतलब है कि ट्रंप की वापसी या यकीनी बना सकता है, क्योंकि जो उम्मीदवार ट्रंप ने नॉमिनेट किए थे वो कितने कामयाब रहे. सो इट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंडम बोथ इन द गवर्नमेंट, बाइडेन गवर्नमेंट एज वेल एज an indication whether Trump can make a credible return. तो एक ये सवाल है. दूसरा सवाल ये है कि इसका, and I think personally I would bring this up as a woman, क्योंकि जो abortion की rights थी and the जो progressive या liberals हैं, उन्होंने किस तरह से push back किया, that's also something that's really important. I'd like to sort of address that question. और फिर जाहिर है एक मैं कहूँगी कि हमें भी, मुझे सोचती हूँ अक्सर कि हम एक डेमोक्रेसी होते, जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होते, तो फिर हमारे यहाँ भी मिड टर्म इलेक्शंस, लोकल बॉडीज इलेक्शंस भी तस्वुर की जाते हैं, बाय इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे. And that is your I think a function democracy जहाँ regularly बर वक्त आपके local bodies elections हो, वो भी referendum होता है on the government. And I think the government PDM की हुकूमत बहुत मसाइल है इस वक्त. Inflation है. I would obviously like us to talk about that at some point as well. You put out a very interesting graph that I had questions about. And then it also is tells you that the electoral process is functioning on time, on schedule, as it should. So yeah, that's kind of sort of my key questions, and I want to throw them to you. Yeah, it was interesting. I mean, based on your questions, some of the things that I followed, right? I think abortion was a big issue. Exit polls, pre-polling elections, where it was top 5 across the board. And if you were Republican, inflation was number 1. If you were Democrat, abortion rights was number 1 for you. But what ended up happening over here were 2 interesting things. One, कि इन्फ्लेशन क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड नंबर 1 इशू था, लोग समझ रहे थे कि रेड वेव आएगी बिकॉज पीपल आर अपसेट एट द रूलिंग पार्टी, आई द डेमोक्रेट्स एंड जो बाइडेन, तो रेड वेव की बातें होनी थी, बट इट डिडंट मटीरियलाइज. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो जिनको मीडिया पे शायद इतना ज़्यादा सुना नहीं जाता और वो अपना एनालिसिस जो है कमरों में बैठ के कर रहे होते हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि द लिंक बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वोटिंग प्रेफरेंसेस इन अमेरिका इज़ वेरी वीक. यानी कि जो अमरीकी वोटर है उसके लिए इशू तो हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से वो वोट किस तरफ डालेगा या डालेगी वो डिबेटेबल होता है. Even despite that, if you were Republican, you were, and inflation was number 1 for you, you were 2-1 likely to vote against the president's party. तो वो तो हमें एक tendency Republican side पे नजर आई. It led to, the abortion issue led to a blue wave in certain parts. For example, Michigan, जहाँ स्टेट सेनेट वाइप आउट हो गया डेमोक्रेट्स ने. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, काफी दिहाइयों से उन्होंने ये नहीं कर सके काम. और तीसरी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, एंड दिस इज आई थिंक अगेन वेयर टू योर पॉइंट, रेगुलर इलेक्शंस होना जरूरी है. इट गिव्स यू अ पल्स चेक ऑफ वेयर द कंट्री इज एटसेट्रा. के अमेरिका के अंदर स्प्लिट टिकट फिनोमेनॉन हमें देखने को नजर आया और ये बढ़ता रहा है. ये इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉर्जिया देखें तो जॉर्जिया में गवर्नर कैंप जो कि रिपब्लिकन थे, ही इजीली वन हिज री इलेक्शन.
ओके सो आप अज्यूम करेंगे कि अब अगर एक स्टेट के अंदर रिपब्लिकन गवर्नर जीत रहा है तो वहाँ उसका जो सेनेटर का जो है जो उसी बैलेट के ऊपर है उसको भी उतना ही वोट पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। वहाँ जो डेमोक्रेट क्या कहते हैं पैस्टर वार्नॉक हैं, सेनेटर हैं, वो री इलेक्शन रन कर रहे हैं। ही वाज टाइड 49% to 49% with his opponent. So the governor on the Republican side won, but the senator candidate struggled to win, and they'll go into a runoff, for example, right? So people split their vote. इसी तरह हमने देखा कुछ और जगहों पे जहां आपने यही पैटर्न देखा कि लोग स्प्लिट कर रहे हैं अपना। पेंसिल्वेनिया के अंदर द बेस्ट स्टोरी फॉर मी आउट ऑफ दिस इलेक्शन वाज द विक्ट्री ऑफ जॉन फेरमैन। जॉन फेरमैन जो थे वो कैंपेन चला रहे थे अगेंस्ट मेहमत औज, जो कि ट्रम्प बैक रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, द सेलिब्रिटी डॉक्टर, मैनी ऑफ यू मे रिमेंबर हिम। और ये एक ट्रू अमेरिकन जो स्टोरी होती है ना, ये वो थी। क्यों? क्योंकि जॉन फेटरमैन हैड अ स्ट्रोक व्हाइल ही वाज ऑन द कैंपेन ट्रेल, and he was hospitalized. He had speech and auditory issues after that because his brain literally got injured. He had one debate with Mehmet Oz where he struggled really badly in terms of saying things because he was still a bit, he's still recovering from this injury, from this stroke. And people said, this will give Pennsylvanians a lot of concern. They don't want to send somebody who's had this stroke, and how will he represent his people? But Fetterman won because people backed him more. The fact that here was a man out of America who was campaigning for the rights of the people, has a stroke, gets back up, keeps getting back up, struggles, recovers, goes on stage, has a bad night, but doesn't give up, keeps coming back. He won. And the voters voted for him, a lot of them from the exit interviews, etc. that I saw, voted for him because he reminded them of themselves. As people out of Pennsylvania, the Rust Belt, people put us down and out, but here we are, we'll come back, etc. Right? So John Fetterman was an interesting story in that sense. And then two other important stories out of this election were the rise of women leaders in American politics. We now have a lesbian governor, and 3 lesbian governors, if I remember, or not governors, 3 lesbian leaders elected, if I remember the numbers correctly. So that process continues of inclusivity in the process. And then recreational drug use was again on the ballot across the board. It won in Maryland. It won in Missouri. In the Dakotas, it did not go through. And Colorado has decriminalized some psychedelics. तो ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है अमेरिकन सोसाइटी की टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेसिव ओपननेस आइडियल्स, देयर इज नाउ टॉक ऑन द हिल, एंड आई विल स्टॉप विद दैट, कि there is enough support in the Republicans and in the Democrats along with the president to change marijuana laws in this country at the federal level. So that will be a big development because broadly speaking, America across the aisle wants to liberalize drug policy, which is huge coming from the war on drug Reagan era laws. अच्छा उज़ैर, यहाँ थोड़ी सी लोगों की वजाहत के लिए जिनको नहीं पता, लेकिन जो अमेरिका में जब इंतखाबात होते हैं, इस किस्म की जो लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है सोशल कल्चरल इश्यूज पर, could you sort of explain that to people as well so they understand? And I think it's something that I think should be replicated. I mean, अगर transgender law for instance है, उसके हवाले से इतना ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हुआ, but this also represents a very people-centered legislative process as well. So could you talk about that? Yeah, and I would love to. And I think before I do that, ज़रूरी है ये समझना कि because states have a lot of power in America, similar to Pakistan after the 18th Amendment, a lot of these things are decided at the state level. और उस स्टेट लेवल के अंदर भी, क्योंकि हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक लीगल स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, तो कैलिफोर्निया या कोलोराडो जैसी स्टेट में इट विल बी ऑन द बैलेट एज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ रेफरेंडम, कि आपसे सवाल पूछा गया इनिशिएटिव 82 फॉर एग्जांपल, या डीसी में चल रहा था ऑन टिप वर्कर्स, राइट? तो द सिटी काउंसिल मे डिसाइड against it, or they initially tried to, but it came back on the ballot and the people get to decide कि tipped wages होनी चाहिए, कि आप जो है मिनिमम वेज बढ़ाएं, और अगर वो सर्वर है तो उसको उतनी देनी चाहिए. इसी तरह ड्रग पॉलिसी पे जो कोलोराडो की मैंने बात की या मैरीलैंड की बात की, ये बैलेट पे था. यानी कि
लोगों ने अपने हाँ या ना का वोट दिया एज अ रेफरेंडम उस बैलेट मेजर पे कि जो है कैनबिस सेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हमारी स्टेट के अंदर, उन्होंने उसको ओवरवेलमिंगली यस कहा। तो अब वो बाइंडिंग हो जाता है स्टेट लेवल लेजिस्लेचर पे कि अब उस पर कानून साजी करें, क्योंकि द पीपल हैव डायरेक्टली स्पोकन ऑन दिस इशू। अगर ये नहीं होता बैलेट पे, फॉर एग्जांपल वर्जीनिया में रिपब्लिकन गवर्नर हैं, गवर्नर यंकिन, उनका कैंपेन प्रॉमिस था कि वो अबॉर्शन लॉज लाएंगे टू रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ अबॉर्शन। तो इनिशियली इलेक्शन से पहले वो काफ़ी रिग्रेसिव लॉ ला रहे थे, 6 हफ्तों का मेरे ख्याल में या 8 हफ्ते तक का लीगली अलाउड है, उसके आगे नहीं। अब इलेक्शन के आउटकम की वजह से उन्होंने अब वो 15 हफ्ते पे चले गए, राइट, विच इज अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर मिडिल ग्राउंड लेजिस्लेशन के बाय 15 वीक्स इन अ प्रेगनेंसी you almost as a family or as a woman have decided where you want to go. And even then, after that, there are clauses in that legislation now being proposed on incest and rape and things like that, threat to life. So again, from that structural perspective, एक ballot होता है, दूसरा होता है कि आप because the state legislature flips, तो मिशिगन में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, तो इट चेंजेस द आउटकम ऑफ द पॉलिसी बिकॉज द लेजिस्लेटिव एजेंडा विल चेंज एट द स्टेट लेवल. Obviously governors play a role in this as well. The governor races are important. And then finally you go to the Capitol Hill level, for example, and you go into senators in DC, House of Representatives. तो काफी सारे levels हैं, but I think the most interesting legislation or the social issue debates and legislation happens at the very local level, and a lot of it goes directly to the ballot and people get to vote for it. Okay, thank you. I mean, again, as I said, it's something that we should look at in Pakistan, just in terms of local bodies, क्योंकि असल जो इंतखाबात है वो नहीं है जो खान साहब चाह रहे हैं या जो पीडीएम हुकूमत ताखीर करा रही है. असल जो इलेक्शंस है, और 18वीं तरमीम के तहत मैं याद दिलाना चाहती हूँ, असल इलेक्शंस लोकल बॉडीज के हैं, जिसपे अब भी ताखीर आपको नजर आती है. और आपको जिस सतह पे देखें, आप जो भी हुकूमत देखें, जो भी सियासी जमात हो, जब वो हुकूमत में होती है तो वो हमेशा उनको डिले करने की कोशिश करती है, बिकॉज इट इज अ रेफरेंडम, बिकॉज यू विल नॉट हैव कैंडिडेट्स, उम्मीदवार वो आपको शायद ना मिले आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, आपकी जमात के लिए, जो विल डिसाइड पीपल्स फेट्स एट द लोकल लेवल. सो आई वांट टू एंड देयर. मगर एक आखिरी सवाल इसी पर, ट्रम्प वापस आ रहा है या नहीं? Ron DeSantis is become the new sort of ruling boy of the Republican Party. ये सवाल मेरे पास भी था अंबर, और क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और हमने पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से की थी कि हर चीज पे हमारा ओपिनियन जरूरी नहीं है, हम एक्सपर्ट्स पे जाते हैं. तो आई डिड इंटरव्यू एन एक्सपर्ट ऑन दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन. Sabrina Siddiqui is the Wall Street Journal reporter covering the White House. So I spoke with her on these topics. Let's have a listen and then we can talk more about what she had to say. Sabrina, welcome to the show, and thanks for taking out the time today. I know it's been a busy few days here in Washington for many of you, and especially given that you're the White House reporter for the Wall Street Journal. Tell us what's the mood like in the White House, given that there was a lot of angst and concern about this being a red wave, and the red wave did not materialize. So how's the president and his team feeling? Well, it's kind of funny that the White House is in this very celebratory mood, because it still looks like President Biden and Democrats are going to likely lose the House of Representatives. Control, of course, for the U.S. Senate remains to be seen. But in a sense, you have a president whose party went into these midterms with control of both chambers of Congress, and probably will still lose one of those chambers, but it's considered to be a big win, right? So there's a little bit of an oxymoron there. But the reason behind that is this is actually a much better result, as you said, for Democrats, with all the talk of a red wave over the past year, that Republicans would storm back into control of Congress. And frankly, just if you compare it to Biden's predecessors, right? So oftentimes the midterm elections, which decide control of Congress, when for an incumbent president, after a presidential election, so the first kind of midterms that any incumbent president has, are typically bad for him and his party, because voters kind of react to the previous presidential election and they want change. You saw that with President Obama, elected in 2008. In 2010, there was a red wave and Republicans took the House. Donald Trump, elected in 2016. In 2018, there was a blue wave and Democrats, swept into control of the House. Now you didn't quite have that play out under Biden. And so I think what the White House is essentially trying to say is that they feel
like Biden, despite his low approval ratings, is not as unpopular as the polls might suggest, and that people do feel okay enough with the direction of the country. It may not be where everyone wants it to be, even within the White House. But people feel okay enough where they still wanted to give Democrats and Biden more of a chance rather than simply handing the keys over to Republicans. That's really how they feel right now. And I saw, in the Journal yesterday, the editorial, two scathing editorials, one talking about Donald Trump, one talking about the Republican messaging. Obviously, all the data, even exit poll data, showed that inflation was the number one issue, crime being among the top three. Abortion on the left was a big issue, and Roe v. Wade and the Dobbs decision. What did the Republicans get wrong in this? Is this the end of Trumpism as we know it, or does Donald Trump have one last stand coming up? Well, I think if there's one thing we've learned, you can never underestimate former President Trump, right? I mean, he just still has a big draw within the Republican Party. There are some Republicans who are kind of using this moment to try and wash their hands of Trump. They wanted to do that for a long time, but been too afraid to do so. And they're saying, look, a lot of the candidates, Republican candidates that Trump cherry picked, lost. It was a bad night for the election deniers and the type of like really hardcore Trumpian candidates. You could say that, but another thing is that Trump himself wasn't on the ballot, right? And so Republicans have seen, and they saw this in the 2018 midterms when Trump himself was in office, that when Donald Trump is himself not on the ballot, then Republican turnout is actually down, right? I mean, one of the outcomes here was that Republican turnout was not quite where it needed to be. It didn't reach the levels that they would have needed for a true red wave. And it's hard to separate that from the fact that Trump wasn't on the ballot, because if you think about 2020, even though Biden won and decisively won the 2020 election, turnout was record high on both sides, and Trump actually turned out millions of new voters in 2020, even compared to 2016, right? So there's still a big draw when it comes to Trump, and I think a lot of Republicans want to say, "Oh, look, this election proves, it's toast for Trump." But just wait until he announces another campaign. I bet that many of them will line up behind him. And then on the Trumpism question, it's also important to remember that, okay, you have like the intense Trump wing, the Carrie Lake, who's like running for governor in Arizona, people like Marjorie Taylor Greene, people who are, are really the like what you think of as Trumpism to its fullest, very much like anti-immigrant messaging, scapegoating minorities, denying the outcome of the 2020 election. But then you have a lot of people like Ron DeSantis, who I know we're going to talk about, the governor in Florida, people like Brian Kemp, the governor in Georgia. They're not exactly traditional Republicans either. They're people who very, very much like rode the wave of Trumpism as well. Ron DeSantis fashioned himself in Trump's image. That's how he actually came up in 2018. The Republican Party is still very much molded into, the kind of under the direction that Trump took them in still. And so, he may be the most, I guess, outrageous example in some ways of Trumpism, and some of the candidates that he spawned, like Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene, they may be the most out there, so to speak, but that doesn't mean that rank and file Republicans have not been just impacted by the kind of messaging and tone that Trump set from the top over, really the last 6 years, if you think back to when it all began in the 2016 campaign. What Republicans got wrong, this is a lesson a lot of parties learn. You can't just be against something, you have to also be for something. You can't just fearmonger around crime and immigration. It's different when it worked for Trump in 2016, because it was also a changed election. You had a two-term, even if popular, Democratic president, but people wanted to change in the White House. And Trump stood for building that wall, for example, right? So yeah, in a way, he was standing and lower taxes. He still put ideas out there, right? Look, he ran on a pledge to ban all Muslims from entering the United States. Maybe more people were comfortable with something like that than we would have thought, right? And building a wall and obviously lowering taxes is popular with certainly a segment of the electorate. Even if it's for the wealthy, people don't always, they may think he promised to cut taxes for everyone, right? I think this time Republicans didn't really run on an economic message. They kept complaining about inflation, but they didn't say what they would do differently. They kept talking about crime and lawlessness, but they didn't actually come out with any clear
agenda or, really platform that was based in any kind of policy. And I think that also caught up with them at the end of the day. So on the House, obviously, a lot of races are still up in the air. The Senate obviously is going to go to a runoff in Georgia, and I'll touch upon Georgia in just a bit, and the race in Florida as well. But Kevin McCarthy, frontrunner to be Speaker of the House, really, sort of part of this MAGA crowd and has ridden the Trump wave over the last few years. A lot of analysis I've read has basically argued that, look, he's going to have his work cut out for him. Because while the United States and the electorate has, in a way, rejected the crazy fringe elements of the MAGA Republican Party to an extent, McCarthy is actually going to be beholden to the Marjorie Taylor Greenes of the world, even more so because of the narrow margin of victory. How does he strategize or govern in the likely scenario that he will end up running for Speaker of the House? First, he has to get that majority, but then he has to do something with that majority. And how do you see that playing out, given the fact that he will be beholden to the crazy part of the party that actually is not winning elections when Trump's not on the agenda? I mean, he's going to have his work cut out for him if he even is able to win a leadership election. I think that Kevin McCarthy is someone who really embraced former President Trump to the fullest extent, in part for his own political career. There's not much belief in Washington that he was like a true believer. He was a Republican from California, but I think that he sort of saw where the mood of the Republican electorate, and now what's happened is what that has done, because people like Kevin McCarthy, Mitch McConnell and a lot of Republican leaders, during the Trump years, what they did is they become big by normalizing Trumpism or looking the other way. They paved the way for the Marjorie Taylor Greenes of the world to walk the hallways of Congress, and now they have to contend with them. So one is, can he even win a leadership election? Will he even be speaker? If they have a majority, it's clearly going to be a very narrow majority, that we know. If Republicans win, it's going to be a plus a net of a handful of seats, I should say, would be like the majority they hold. So those are very slim margins. That also means that whether it's Kevin McCarthy or someone else, whoever is a Republican Speaker of the House, if there's a Republican speaker, they're going to need Democratic votes to do anything. There's no way they're going to be able to rally all House Republicans behind anything under a Biden presidency. And it's like, imagine Marjorie Taylor Greene, or if Lauren Boebert survives, or just those types of the Freedom Caucus, as they're called, as these conservative hardliners call themselves. Imagine them voting to increase the debt ceiling, or voting to pass a bill that's going to extend funding for the government and avoid a shutdown. Those votes are going to have to come from Democrats, and then whichever House Republicans, a handful, maybe a couple dozen moderates to get over the finish line. And so I think that Kevin McCarthy, or really any Republican speaker, is probably going to get eaten alive by his or her own party. But I think but having said that, what that means is, there's also going to be immense pressure to oversee investigations of the Biden administration, of Biden's son, Hunter Biden, clamoring to do it, of Biden himself, his family. They're going to really probably try and drag them through the mud. They say they will investigate the withdrawal of Afghanistan, of the U.S. from Afghanistan. I think that will be a component, and they'll probably be under pressure to impeach Biden, but then that's going to be very politically risky because it's very different from the Trump years. And these midterms, if anything, proves that politically trying to impeach Biden could be very unpopular, because it turns out he's not as unpopular as people thought. And also, I just think that what it also means is when it comes to legislation, if there's a Republican House, really the only thing that's going to get done is, if it even gets done, is anything that's like must pass legislation, is what you call it, quote unquote, which is like I said, funding for the government to avoid a shutdown, raising the debt ceiling to avoid economic calamity. If there's some kind of emergency relief because of a hurricane, or that's the kind of stuff that you'd see. You could obviously, if Republicans take the House, then Biden's agenda is pretty much fair to say is dead. President Biden, has shown and talked about the fact that he knows the inside baseball game in Washington, knows how to compromise, knows how to make deals happen.
the Inflation Reduction Act negotiation, right? He just pulled it out of left field, secret negotiations, and that surprised the Republican Party in terms of how it played out. Do you see any chance that there might be some things that where the compromise may be open, there may be openness to compromise in the sense that beyond the debt ceiling, beyond the near-term hair on fire moments, or will this be 2 years of dysfunction on the Hill and the presidency basically governs through executive order? It's hard because I think, on the one hand, that was the premise of Biden's presidential campaign, right? That he's been in Washington for decades. He knows this town better than anyone else. He was the guy as vice president who the Obama administration dispatched to Capitol Hill to negotiate at the 11th hour and to cut the deal. He's always, had that reputation. He works across the aisle. He's had a lot of Republican friends in Congress. And, you saw that actually worked to his benefit with the infrastructure bill. That was something that was passed with bipartisan support. And it was probably the only major legislation, when I say like really big piece of legislation, like I said, not emergency funding, not something to fund the government, not some crisis or not, authorizing aid to Ukraine or something. This was like, in terms of domestic policy agenda, the infrastructure bill is sometimes almost overlooked, is probably one of the only recent massive pieces of legislation that was passed along a bipartisan basis in the last couple decades. And nothing like that passed under Obama along a bipartisan basis, nor did it under Trump. And it's not I think any fault of those presidents as much as it was the political climate. Obviously Trump, he didn't necessarily make the same effort to, I think, negotiate with Democrats. But, I think with Biden, so there is that question mark of, can he do it again? I just think because there's a presidential election on the corner, it's hard to see that Republicans would come around on any other bill. At best, maybe it would be something in the cybersecurity realm, or like, I was going to say, like, stuff focused on China and competing with China might bring people together. Something to do with tariffs or cybersecurity, or, again, if there's, aid that needs to go to more aid or more support to Ukraine and Congress needs to approve it. I think that's the kind of stuff that you might see get done. But that Republicans are going to want to ensure that there are no big victories for Biden, especially going into a presidential election year. Last question. Where does the Republican Party go from here? We've already seen Donald Trump put out a press release calling Ron DeSantis Ron DeSanctimonious. And that is out in the open, that fight. He's saying that he knows a lot of secrets about the governor of Florida. But then also in Florida, we saw, and across this election, right, the split voter phenomenon that you saw, for example, in Georgia, the Senate race being super tight, but the Republican governor candidate breezed through. In Florida, Ron DeSantis did phenomenally well. In Michigan, there was a sweep on the blue wave, as they're calling it in Michigan. So we saw a lot of this weird regional dynamics play out in this election. But the big question is for the Republican Party, where does it go from here? I don't think they know. I think they're preparing for a very crowded primary and for people to eat each other alive. Look, like that's what Trump is already doing. He's going after Governor Ron DeSantis. He's going after Governor Glenn Youngkin in Virginia. The knives are out. And what happens is when Trump loses, he looks for someone to blame, and he's going to lash out at Republicans who have been more successful than he has, and I think try and undercut them because he feels threatened. So I think that they're gearing up for a lot of nastiness. But I think what it means is it's not necessarily Trump's for the taking. I think just a year ago, if you asked Republicans who's going to be the nominee in 2024, they'd say it's going to be Trump again. Now I think you do have Republicans trying to prop up people like Ron DeSantis. But it's like, as you said, you see a lot of regional splits. And I think for Republicans, the one thing they're going to have to reckon with is that Florida is not the rest of the country. So Ron DeSantis may have swept to victory, but a lot of these other congressional races, look at how the House and Senate are being decided. They're really, really tight. These are really narrow margins. And so
what worked in Florida won't necessarily work nationally. And you can basically just agree now that Florida is a red state. It's no longer a swing state. And so Ron DeSantis' appeal may not be as national as they think. So I think they're going to, and sorry to interrupt here. I would just, for the audience, just also put out the historical fact that Jeb Bush was considered frontrunner back in the day, from Florida, successful, and Trump ate him alive like within days of the primaries. Yeah, and I think that, I think that goes back to also the Trump factor that, okay, it may not be his for the taking, but you can never count him out because he still has a lot of support from Republican voters. And once he gets back out there, they may start to see that he's very much held his coalition intact. And again, it may just be that because he wasn't on the ballot, they didn't turn up in the numbers they needed in these particular midterm elections. So a lot of these Republicans who want to say like, oh, this is time to finally move on from Trump. It's funny because most of them will say so anonymously, or it's going to be people saying it who have already distanced themselves from former President Trump. If you ask a lot of Republicans in Congress, they're still very measured when it comes to how they talk about Trump. Some of them are openly saying, I'm ready to go and support him if he runs again. There's still a lot of fear of former President Trump within the Republican Party because they know that overnight they could see him back at the top of the ticket. And so I think that it's hard to say who the Republican nominee will be, but I do think they're scratching their heads after what was supposed to be a red wave that did not materialize, and realizing that this battle for the Republican Party and this kind of war between the establishment and the Trump wing, if you can even call it that, because it's all kind of conflated now, that's going to play out for many more months, if not years to come. Well, lots of interesting stuff coming down the pipe for us as we get into the next election season in America. And of course, there's one coming up in Pakistan before that. But Sabrina, thank you so much for taking out the time for sharing your insights. And we'll probably have you back on again as the election season and the primaries heat up in the coming months in the United States. Thank you. Thank you so much. Happy to do it. All right, so now Amber, audience ne bhi suna, Sabrina was talking about the future of the Republican Party. Trump, did Trump win or lose? Did Biden win or lose here? You heard it. Did that answer your question, or do I need to give more analysis in terms of where things are? Because this is very interesting where we are in American politics. No, I think it answered my question as well, and it kind of tells you that एक तो ये बात है कि अभी जो next जो nominations होगी and the next round in which with पहले तो ज़ाहिर है सियासी जमात के अंदर यानी कि Republican Party के अंदर ही इंतखाब होता है. There's still a long way to go, but obviously Ron DeSantis is emerged as a favorite, and Trumpism may be dying out. Yeah, Trumpism may be dying out, and I think Sabrina had this interesting point when I asked her the same thing as well. कि हमें ये, and I agree with her, मुझे उसके कहने के बाद ये बात याद आई कि 2016 में जब रिपब्लिकन प्राइमरी चल रहा था तो लोग कह रहे थे जेब बुश जो है वो नंबर 1 कैंडिडेट है, and Trump wiped the slate off of him. Like, मतलब Jeb was nowhere to be seen. So Ron DeSantis, or Ron DeSanctimonious, as Donald Trump has given him a name, as he loves to do, and he's actually quite good with these names. ये जरूरी नहीं कि it's that easy for him. Trump is still very popular in the Republican Party, and the Democrats, from what I know, will actually be salivating at the incoming fight between these two men, but also hoping that Trump actually wins again. And the reason for that is that we have enough data now to show that Trump का जो vote count का जो cap है वो बड़ा hard एक top उसकी ceiling है. उससे आगे जाना बड़ा मुश्किल है. इस इलेक्शन में भी हमने देखा. तो अगर ट्रम्प जीतता है ये इंटरनल फाइट, तो running against Trump on the anti-Trump agenda is probably going to be easier than somebody like Ron DeSantis or somebody else who perhaps is diet Trump, right? कि उसने जो है ट्रम्प की core policies तो अपना ली वोट जीतने के लिए, लेकिन बात करने में, उसके तौर तरीकों में, उसकी political correctness में, they're not a troll like Trump, and that makes it easier for some other people to vote for that agenda as well. Okay, I think आपने जो बात की थी, and I want to sort of use this as a segue. Inflation was an important issue, but not what people vote on. लेकिन जब भी आप पाकिस्तान में बात करें कि इस वक्त आपको top जो issues होते हैं वो businesses के लिए होते हैं. Multiple surveys have shown that they're concerned about their bottom line.
and a majority have increased over the last year. Inflation पे, you posted a very interesting infographic जिसमें नजर आ रहा था कि 2019 से पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही और परेशान कुन हद तक. So my question here is, can it be controlled? I mean, it's not India or Bangladesh में जो inflation है, given that they've had the same issues, global जो issues है, which is obviously COVID is one big one, and then oil and gas and the Ukraine-Russia war is the other one. They face the same issues as Pakistan has. मगर वहाँ inflation इतनी ज़्यादा नहीं है. So just quick take on that. Yeah, it can be controlled, and उसके control के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो ज़रा रियलिटी से जुड़ा हुआ हो. हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है वो रियलिटी से इग्नोर होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ ये बात कि जब आप पाकिस्तान में लोगों से बात करते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन हमें कम करनी है, कहते हैं नहीं पाकिस्तान इज़ डिफरेंट, वहाँ इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का इतना ताल्लुक नहीं है, तो बाकी ममालिक में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, हमारे यहाँ नहीं है. तो जब आप इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाते हैं, होता ही है कि पाकिस्तान में जो ये डाइवर्जेंस हमने देखी इस चार्ट के अंदर भी नजर आती है कि 20-something% इन बांग्लादेश इन इंडिया, ओवर 60% इन पाकिस्तान. वो इसलिए है क्योंकि आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क रही है कि आपने डेफिसिट्स हाई रखने हैं, फिस्कल डेफिसिट्स. आपने इंटरेस्ट रेट्स अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में रियल इंटरेस्ट रेट्स आर इन नेगेटिव टर्म्स. नेगेटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ कि आपके लिए इंसेंटिव है कि आप ये पैसे खर्च करें, सेव ना करें, बिकॉज इन्फ्लेशन इज रनिंग हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी और द बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी. तो जब आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो स्पेंड करें, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी प्रेशर आएगा, बिजली पे भी प्रेशर आएगा, इंपोर्ट्स पे भी प्रेशर आएगा, एक्सेट्रा. तो यू हैव टू स्लो डाउन ग्रोथ. अब पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज एंड वेरियस अदर इश्यूज द इंसेंटिव ऑलवेज इज टू जनरेट ग्रोथ because you get to sort of have the near-term benefits of generating that growth. या आपने डॉलर को मजबूत कर दिया आर्टिफिशियली और रुपए को मजबूत कर दिया आर्टिफिशियली, जैसे डार साहब करने की कोशिश कर रहे हैं. उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट आप नहीं देखते क्योंकि आपको नियर टर्म में पॉलिटिकल गेन चाहिए. तो पाकिस्तान में ये मसला रहा है. वी बिन रनिंग हाई फिस्कल डेफिसिट्स, we've been running a loose monetary policy to this day, and rather than getting the basics rights, आपकी स्टेट बैंक जैसे कल उन्होंने नोटिस इशू कर दिया कि हमने जो है अगर आप करेंसी की मार्केट में आपको इश्यूज हो रहे हैं तो आप कंप्लेन करें, विसल ब्लोअर फोरम बना दिया. तो जी ये विसल ब्लोअर फोरम से एक्सचेंज रेट का मसला हल नहीं होना. एक्सचेंज रेट का मसला हल होना है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से जो इस वक्त डिसकनेक्टेड है फ्रॉम रियलिटी, एंड सो लॉन्ग एज दैट कंटिन्यूज you will have this problem. And final point on this, I think there is a responsibility also on Parliament, which is dysfunctional for all the reasons we keep talking about, to then ask the state bank. आपको अगर state bank autonomy दे दी गई, जहाँ price stability is your mandate now, part of your legal mandate. So what are you doing and why are you failing? And I'll give the example of India. India may be the inflation now is running above the target rate that the RBI has, that Parliament has given to the RBI, right? That right to control. So Parliament is grilling the RBI there now. Okay, why are you failing? And what is it that you need to do or somebody else needs to do to achieve your legal, mandate that we have given you as we the people, right? So we have to grill the state bank on this as well. कि ये नहीं हो सकता कि आप independence और autonomy मांगे और वो आपको दे दी जाए और उसके अंदर जो आपका टॉप मैंडेट है आप उसमें फेल किए जा रहे हैं और आपसे सवाल भी ना हो कि आप क्यों फेल हो रहे हैं. एंड अगेन देयर आर वेरियस रीजंस, नॉट ऑल ऑफ देम रिलेटेड टू द बैंक. फाइनेंस मिनिस्ट्री साइड पे भी इश्यूज हैं, बट फंडामेंटली एट इट्स कोर इकोनॉमिक पॉलिसी जो पाकिस्तान में बनाई जा रही है इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी. And so long as that continues to be the case, we will see charts like that where there's a divergence between Pakistan and the rest of the region. And the inflation rate is shocking, I would say, and it sort of bears out how a lot of people feel about whether it's this government or the last government. But आखिरी जो सवाल इसी हवाले से मेरा है कि पिछले साल भी दो वज़ीर खजाना गुजर चुके हैं, इस साल भी दो वज़ीर खजाना. ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये हुकूमत चलती है बजट के सेशन तक तो जाहिर है कि इलेक्शन बजट होगा. Do you think it would help if we had a free and fair election and the new government had the mandate for 5 years? Or do you think it doesn't matter? No, I think it would definitely help, and the reason for that is not कि polarization कम हो जाएगी आपकी सोसाइटी के अंदर या किसी तरह ये जो लड़ाई चल रही है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगी, but
एक क्लैरिटी आ जाए कि ये जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों ने अपनी वॉइस, अपना वोट कास्ट किया, whoever wins, whoever gets to form the government, that dispute is settled, so we can go back to making parliament relevant. क्योंकि इस क्राइसिस से डील करने के लिए इकॉन साइड पे आपने मुज़ाकरात करके कंसेंसस बिल्ड करके एक फ्रेमवर्क बनाना है. अगर कोई भी समझता है, इवन इमरान खान विद a 2/3 majority, if he thinks that he can have his way with this economy without achieving consensus across the aisle, he is mistaken. Because the moment you do the types of reforms जिनकी ज़रूरत है इस मईशत को, आप काफी सारे उन सेक्टर्स को हर्ट करेंगे जो बहुत पावरफुल हैं. आपने रियल एस्टेट के पीछे जाना है, आपने रिटेलर्स के और हमें ये भी मालूम है कि इन तमाम सियासी जमातों में ऐसे जिनको पाकिस्तान में तो माफियाज कहा जाता है, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट, जाहिर है फाइनेंशियल इंटरेस्ट सब मौजूद है, चाहे आप शुगर इंडस्ट्री में देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट देख लें, एक्सेट्रा. Exactly. तो उसके लिए I think that's why a free and fair election that brings a government with a mandate in is important. But so here's another question for this throw at you. Sooner, as in यानी कि जो बात की जा रही है around spring, or when the parliamentary term ends, which is after August, which means elections in October. See, I mean, this is... does that matter? Does timing matter? Does timing matter? Not particularly, I would say, क्योंकि अगर आप बजट रोल आउट करते भी हैं, let's say अपने बजट के बाद इलेक्शन कराना है समर के अंदर, which takes you to August basically, तो वो नई गवर्नमेंट आएगी, उसने वैसे ही जो है मिनी बजट तो देना ही पड़ेगा ना. अगर आप इलेक्शन करवाते हैं बजट से पहले और नई हुकूमत आती है, तो वो बजट का प्रोसेस जब होगा, उस पर जब आपने जो कोट एंड कोट मुश्किल फैसले करने होंगे, वही आपका पॉलिटिकल कैपिटल वाइप आउट कर देगा विद इन 2 months, राइट. तो इन अ वे, इफ आई एम पुटिंग द हैट ऑन ऑफ समबडी हु इज एडवाइजिंग इमरान खान, मेरी एडवाइस यही होगी कि खान साहब आप बजट के बाद ही इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप बजट से पहले करेंगे तो जो पॉपुलिस्ट बजट आप सोच रहे हैं आपको देने का मौका मिलेगा आते के साथ ही रिलीफ आवाम को देने के लिए नई मैंडेट के साथ, वो नहीं आपके पास स्पेस होगा. इट माइट बी बेटर फॉर यू टू वेट and then come in right at the end and put all the blame on the other guys, which is what Shehbaz Sharif faltered on as well. Day zero पे अगर वो अप्रैल मई के अंदर ये सारा काम कर देते जो उन्होंने 2 महीने लगाए, तो इतना डैमेज नहीं होता, because he could have blamed his predecessor, right? Khan साहब should have that strategy in mind as well. I think अगर वो समझते हैं कि इस वक्त वो फोर्स करा देंगे इलेक्शन और हुकूमत मिल जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर जो इकोनॉमिक पेन आना है, I think that will wipe out all the credibility he's built, so he's better off waiting in my view. Okay, so politically, economically, बेहतर है कि budget के बाद ही इंतखाबात हैं. I'm going to end it there and let's move on to our winners and losers section. And I think this is where we can bring in cricket, because Pakistan is in the final. Yay! और 1992 वर्ल्ड कप से भी बहुत ज्यादा इस वक्त लोग मवाजना कर रहे हैं. बिल्कुल, और मेरा विनर इस वक्त पाकिस्तान टीम है, और पाकिस्तान टीम के अंदर द विनर अमंग विनर्स इज मोहम्मद हारिस. केम आउट ऑफ नोवेयर, गेट्स पुश्ड इन टिपिकल पाकिस्तान फैशन के जी आप खेलें, आप वर्ल्ड कप जो है कुछ करें, तो वो आए. एंड व्हाट आई लव अबाउट हिम इज दैट he's got that intent of a modern day cricket, does not care about getting out. He will play the risky shots, which is what you should do in T20. And he changes the nature of the game, just his presence on the field. So the Pakistan team, boys in green, are the winners for me. And among them, Mohammad Haris critically, because he just added that extra energy into this team. And again, New Zealand ka jo match tha, Amber, I don't know if you were watching it ball by ball, but मुझे याद है 8 रन पे भी जो है ना टेंशन चल रही थी कि जी अब 8 रन कैसे बनेंगे. And Mohammad Haris got a in-swinger on his legs and he played a wonderful shot through the offside, got that boundary and then hooked that hook for 6 as well. So yeah, he's my winner this week. Okay, I mean, I will say IPL seems to be a loser here. इसलिए Indian Premier League, क्योंकि आप इस वक्त ये बाबर आजम से भी पूछा भी गया था, और ये वाज़ेह होता है कि इंडिया में जो Indian Premier League है, it's become a big commercial event, but it hasn't helped India to win T20s, World Cups. So, I just want to say that's my kind of loser. IPL is a loser for me in terms of cricket. And I'm not in any way a huge sort of dedicated follower of cricket. Magar ye bhi khadcha hai ki sab barish hogi on Sunday. So, let's see. Let's see, fingers crossed. So, I think the other, the loser on my end is definitely Donald Trump. I think if the Wall Street Journal editorial board has
the courage, I would say, to come out and blame Donald Trump for this loss, then I think the tide is turning. But don't write off Trump, as we talked about already, and as Sabrina talked about as well. But really, to me, Trumpism and Trump is the loser of this week, because it seems like the American people are becoming inoculated from the populism that Donald Trump has been selling. And yes, there are a lot of buyers for it still, but not the majority of the people. और मैं ज्यादा इसमें तबसरा नहीं करूंगी, लेकिन वन ऑफ माय लूजर्स ऑफ द वीक इज कामरान शाहिद, एंड आई एम गोना पुट माय सेल्फ आउट देयर, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अरशद शरीफ की टॉर्चर, एलिजेड टॉर्चर की पिक्चर्स बगैर तस्दीक किए, बगैर इंडिपेंडेंट एनालिसिस अपने प्रोग्राम में शामिल करके, और खानदान के जो जज्बात है उन पर जो गुजर रही है उसके सोचे बगैर जो ये तस्वीरें आम की, ये जो सहाफती तमाम जो इक़दार होते हैं और उसूल होते हैं उसके बरखिलाफ की, और इसलिए माय लूजर ऑफ द वीक इज कामरान। And with that, that's the end of this week's episode. Amber, thank you again for taking out the time. Thank you to the audience for tuning in. If you like our podcast, subscribe to it on YouTube, on your favorite podcast channel, tweet at us on Twitter, share your feedback in the comments. And if you have a topic that you would like us to touch upon or cover in detail, let us know, including for expert interview suggestions. Thank you, and we'll see you next week.